चल रही थी, तो मेरे चैनल को जाके कैसे वीडियो और मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड moisturizer on my skin. It is clean face, and then I'm going to apply this photo finish foundation primer of Milano, and थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, and इसको हम अप्लाई करेंगे। I will be using Maybelline New York Fit Me in the shade 220, and it perfectly matches my skin. तो ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं, मतलब पार्टी डाल पार्टी कर रहे हैं नाइट, आप 2 लेयर की अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन, बट मैं फॉर डे टाइम अप्लाई कर रही हूँ मेकअप, तो मैं ये looking really nice. So now I'm going to do my eye makeup. For guys, I will be creating some so I want some pinkish on my crease, so I'm taking eyeshadow from this palette, the pink one. Done with my crease, so I'm going to take this angular brush use करते हैं for creating wings. So I want my dress is of wine color, so मैं इसमें से ये वाला color wine color use कर रही हूँ from this palette, and we are going to create a wing. Now if you will like see closely, तो मैंने जो ये वाली चीज़ है ये थोड़ी सी रखी है, उसमें हम लगाएंगे गोल्डन ग्लिटर फ्रॉम दिस पैलेट, दैट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसका ढक्कन टूट चुका है, सो आई एम गोइंग टू टेक द ग्लिटर, और मैं ये गोल्डन ग्लिटर पिक करूँगी। आप चाहें तो गोल्डन ग्लिटर पिक कर सकते हैं, माई ड्रेस गोल्डन टेंट, गोल्डन ग्लिटर विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स, और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी जो मैंने एरिया क्लीन किया था। तो मैं आईलाइनर लगाना प्रेफर नहीं करूँगी मे बी इस लुक के साथ, तो पहले मैं ये उतार देती हूँ, और अगर मुझे लगा कि मैं आईलाइनर लगाना चाहती हूँ तो आई विल बी डूइंग दैट।
guys, I am done with my eyebrows. मैंने eyebrows fill कर दिए. Now I'm going to go to contouring part. So contouring के लिए ये मेरा palette और I'm going to take this blusher Now I'm going to take highlighter और highlighter के लिए मैं यही यूज कर रही हूँ जिस from Look You I hope you मैंने सही pronounce किया इसके लिए सेट कर अच्छी करेंगे to apply it on the lower right side. आप ये स्टेप मस्कारा की पहले करिएगा बिकॉज आपका मस्कारा अदरवाइज खराब हो जाएगा. अब थोड़ी खुली खुली लग रही है. So guys, today I will be using this wine shade from Neon in the shade 11. आपको so this is my complete look and I feel like कि लिपस्टिक जा रही है but if you feel like कि थोड़ा सा हल्का डार्क शेड है so you can apply a less lighter shade और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी शेड आपका डार्क हो गया तो just apply another coat of compact. So guys, this is my complete look, you can see. So अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो thumbs up और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा.